व्यक्ति परिवार में आपका ओम शांति, आज bienvenue à पहला Vyakti Parivar. नई सीरीज का यह हमारी जुलाई की सीरीज है। उसका टॉपिक है करन करावन हार। Donc, ये nous avons हमारे प्यारे un nouveau sujet pour le mois de juillet et c'est Karan Karavanhar. ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी बनो। OK. ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले Donc, les बनो। signaux aviates. संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम Devenez Brahma Achari, जिसको ceux फुटस्टेप qui suivent बोलते les हैं, activités du मन Père वाणी Brahma. कर्म के कर्म Brahma रूपी Achari कदम signifie celui qui suit les ऐसे activités du ब्रह्मचारी Père Brahma, आचरण और que चलन chacune de vos सदा pensées, de vos संकल्प paroles et de vos और actions अभ्यास soit के naturellement dans les pas du अनुसार। Père Brahma. अभी Que हम chacune de धीरे vos से सुनते pensées, हैं। paroles et actions soit Brahmachari. Le visage et l'activité de tel Brahmachari sont toujours intériorisés et donnent l'expérience de la joie ou de la décence. Maintenant, nous allons écouter Moini Didi. मधुबन से अव्यक्त इशारे इस समय आए हैं कि श्रम ब्रह्मचर्य नहीं पर ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप का जो आचरण था, उनके संकल्प वचन कर्म हर कदम पर अपना फुटस्टेप या कदम रखकर चलना। पर ये दो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे कि उनके चेहरे Je पर m'excuse, il n'y a pas de traduction encore. तो अंतर्मुखता एक बड़े सूक्ष्म में एकाग्रता है। कई बार दादी जान की सबको देखती थी, जैसे कोई दरवाजे से आ रहा है तो सभी उधर देखते थे कौन आ रहा है। दादी कहती क्यों देखते हो आप लोग? हमेशा दादी को ये होता था कि आपकी नेत्रों में एकाग्रता हो, चेहरे में एकाग्रता हो। इसका मतलब कि जो अंतर्मुखी होगा उसकी आंखें इधर-उधर नहीं जाएंगी। कई होते हैं कान पता नहीं कहाँ से बात सुन ही लेते हैं, राइट? फिर चाहे वो उनके काम की है चाहे नहीं है। तो जो अंतर्मुखी होता है अंदर में, जो स्वयं पर अटेंशन देके अपनी एकाग्रता पर ध्यान देता है, उसके जीवन में अतीन्द्रिय सुख होता है। क्योंकि जो इंद्रियों का सुख है, मैंने कुछ अच्छा लगा देखा, कुछ अच्छा लगा सुना, कुछ अच्छा लगा तो हाँ, तो जैसे एक कर्म इंद्रियों का आकर्षण है। हमारे ब्रह्मा बाबा का चेहरा बिल्कुल एकदम अंतर्मुखी था, तो हर्षित भी था। Le visage de Brahma Baba était toujours souriant. Chacun pourrait un peu barater sur cet aspect, que si je suis un brahmachari, ça veut dire que je suis les pas de Brahma. Donc, il y a l'introversion. बाबा बहुत मूल्यों में कहते रहे बच्चे हल्के रहो, भारी नहीं हो, बाबा जिम्मेवार है।
Baba dit, ne devenez pas lourd dans les responsabilités. Baba est toujours responsable. Et ayez toujours dans votre conscience que Baba est Karavanhar. Donc, je pensais, OK, je suis un instrument, limite, mais même si je suis limite, je dois quand même faire. Non, ce n'est pas que je vais juste dire Baba va le faire. Baba va le faire. Mais lorsque vous l'accomplissez, vous le faites, Baba le fait à travers vous. Cela veut dire que s'il y a un besoin quelconque, Baba va toucher votre intellect, Baba va vous aider, Baba va vous donner le pouvoir. Mais si je ne fais rien, et si je continue de dire que Baba, tu es Karavana, qu'est-ce que Baba peut faire? Donc, plus vous avez du pouvoir, plus vous avez du zèle et de l'enthousiasme, mais il y a un besoin pour plus que cela. Nous devons avoir la foi que Baba va nous donner le pouvoir. Je garde mon intellect pur, mais quelle est ma responsabilité? Je dois penser, avoir des pensées élevées. Et ensuite, je vais avoir des paroles élevées et je vais agir et faire des actions très élevées. Et si c'est juste, si c'est selon le drama que c'est important, alors quel que soit le pouvoir que j'ai besoin pour la tâche, alors Baba va le combler. Ce n'est pas que je dois faire tout cela vraiment facilement et que Baba va tout faire. Non, pas comme cela. Ça ne fonctionne pas comme cela. Baba a dit à ses enfants, tu prends un pas et lorsque tu prends du courage avec et tu fais ce pas, Baba va voir que l'enfant a beaucoup de courage et il va donner 100 fois l'aide. Si vous avez un petit peu de courage, Baba va vous aider. Alors, intérieurement, souvenez-vous toujours cela que Baba est Karan Karavana et je me souviens de cela et ensuite, en fait, c'est comme si j'invoque Baba. Si je n'invoque pas Baba, qui va faire la tâche? Baba Baba va le faire, mais pas seulement à travers moi, mais où il y a de la coopération, Baba va le faire à travers les autres aussi. Mais je dois être dans le souvenir de Karan Karavana, je dois l'invoquer et je dois continuer d'avancer. Je dois continuer d'avancer et Baba va m'aider 100 fois plus à chaque pas. Baba, il y avait le Murli à propos de Karan Karavana. Nous allons aller dans les aspects profonds de cette expérience de Karan Karavana. Vous pouvez aussi faire du baratage sur ce sujet de Karan Karavana. Comment Baba est-il Karan Karavana? Et voyez dans votre expérience que oui, Baba a fait que ceci arrive. Baba fait de moi un limite, un instrument. Alors, Baba est celui qui fait de moi un instrument. Alors, c'est Baba qui va me faire aussi, mais quelquefois, intérieurement, il y a un petit peu de paresse ou quelquefois, nous sommes trop dépendants sur quelque chose. Baba dit non, vous devriez le faire avec un courage complet. Et à chaque fois, Baba va vous aider. Vous allez recevoir l'aide de Baba ce mois entier. Nous allons regarder cet aspect de suivre les pas de Brahma, d'être Brahmachari aussi. Sur Karan Karavana, nous allons noter les points dans le Murli, les expérimenter. Le devoir, la pratique pour ce mois, c'est Karan Karavana. Basé sur ce sujet de Karan Karavana, nous allons pratiquer pendant tout le mois. सफलता का विशेष आधार ही है Karan Karavana, la fondation principale pour le succès est le Père Karan Karavana
me fait faire, moi, l'âme Karavanhar. Moi, l'âme, je suis l'instrument. Om Shanti.